Hello and welcome to Newsclick. I'm Anusha Paul. Here at Newsclick, we try to daily bring you the news that is important but not so trending with our daily roundup. The 182 feet Statue of Unity in Gujarat, deemed tallest in the world, is back in the spotlight over non-payment of wages to the workers employed for its maintenance. Hundreds of employees at the site have reportedly not been paid for the past 3 months and are now resorting a strike this week to draw attention to the indifference of the state government. The employees who work for a company named Updater Service Limited, including security guards, gardeners, sweepers, liftmen, ticket checkers, are dependent purely on their daily wages. Speaking to Newsclick, Arun Mehta from Centre of Indian Trade Unions in Gujarat said the workers are employed under a private company which was to be given grants by the state government. The pending wages include Rs 8,000 to 10,000 per month, and some supervisors whose salaries are amounting Rs 14,000 and perhaps more. These workers have not been paid for the past approximately 4 months. Currently, they are resorting demonstrations and they even formed a human chain to draw the attention of the government. They cannot resort any aggressive protest given in the fact that they are contractual workers. Union Tourism Minister KJ Alfonso in a parliamentary reply had claimed that the revenue generated from visitors to Statue of Unity from November 2018 to January 2019 is Rs 19.47 crore. And the number of tourists who visited the Statue of Unity at Kevadia in 3 months from the November 2018 to January 2019 was 7,81,349, as against an yearly average of 8,22,009 tourists visiting Sardar Sarovar Dam at Kevadia in last 5 years. On the one hand, the state government has been trying to project skyrocketing profits for the statue, and on the other, it hasn't been able to provide the minimum wages to the employees maintaining it. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal once used to roar about the zero tolerance to the corruption policy of his government. But now his own government has become entangled in job scams. In the latest development, at least 2 departments, Panchayat and Rural Development (PNRD), the Information and Public Relations Department (IPR) have been brought to the spotlight following the announcement of results of selected candidates. Let us take a look at the PNRD department's appointments. The department conducted the examination in more than 100 centers across the state. The examination was held for 945 posts where more than 1 lakh students appeared for the recruitment test. When the tests were conducted on May 20, 2018, anomalies on a large scale surfaced in many of the exam centers. The local media was flooded with the reports of the anomalies. Candidates who had appeared in the examination said that the exam halls were full of showers and there was no apparent control by the authority. Many candidates allegedly could use their mobile phones to contact their friends outside through the WhatsApp or the text message to know the answers. After large-scale protests, the case was referred to the CID department for an investigation, and meanwhile, a PIL in the Guwahati High Court was filed. The court has given a stay order. The CID report said that there were huge anomalies at the 18 exam centers in 9 districts. After almost a year, the final list of selected candidates was declared on March 8th. However, the protests erupted again across the state. In addition to the question on the process of selection, the protesting candidates have claimed the document verification process has also not been carried out properly, and the appointment letters were distributed in a hurried manner. What we are witnessing now is one of the biggest scams ever in Assam. The BJP government, who campaigned for zero tolerance to corruption, now seems to have been involved in the scams. Now moving on to the Kashmir. Nobody knows the reality of the Balakot airstrike. While the Indian Air Force is saying that our work is to attack the target, not to know how many damage is done. There is a lot of speculation from the media. The ruling party in India, that's BJP, on other hand, is claiming that 200 to 300 terrorists have been killed. The government of Pakistan have prevented any media organization from visiting the site of the strike and has said that the damage is being overplayed by the Indian side. What really happened still remains unknown. We have Newsclick's editor-in-chief Prabir Purkayastha and defense analyst D. Raghunandan with us to talk about the surgical strike 2.0. न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं
उसकी जो सैटेलाइट इमेजरी निकली है, तस्वीर निकली है, उसका मकसद, उसका मतलब क्या है, और इसको बात करने के लिए हम रघुनंदन से बात करेंगे। रघु, ये जो बात आई है कि सैटेलाइट इमेजरी अभी वो प्लैनेट लैब्स की तरफ से दिया गया है, रॉयटर्स ने इसका पब्लिश किया है, ये काफ़ी डिटेल सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें 1 मीटर के निचले रेजोल्यूशन मिलता है। सो इसको हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी कह सकते हैं। इसके मुताबिक बालाकोट के में जो मद्रासा, जैश ए मोहम्मद के मद्रासा थे, उस पर ख़ास कोई बॉम्बिंग के नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए सवाल आया है कि सचमुच हमने क्या बमबारी की और उस पर कितना नुकसान हुआ। ये 300, 600, 400 जो हम ढेर करने की बातें कह रहे हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी गोखले साहब की पहला इंटरव्यू से शुरू होता है, उसका सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वायुसेना ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे लोग मरे नहीं मरे, कितने मरे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एयर मार्शल धनोआ ने कहा खुद। तो अगर वायुसेना के पास इसके एरियल तस्वीरें हैं जो हवाई जहाज़ ने ली होंगी या सैटेलाइट के तस्वीरें हैं, तो उसमें शायद एक तो बिल्डिंग में क्या हुआ वो दिखे, और दूसरा अगर वो उसी टाइम के खींचे हुए तस्वीरें होंगी तो शायद उसमें कुछ लोग का इधर उधर भागना वो भी शायद दिखे। पर इसके बारे में 1 मीटर रेजोल्यूशन में तो दिखाई 1 मीटर रेजोल्यूशन में तो आराम से दिखेगा। तो पर ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ इसका। वायुसेना ने कहा है कि जो भी हमारे पास हैं तस्वीरें वो हमने सरकार को दे दी। अब सरकार के ऊपर है कि वो उसको रिलीज करते हैं या नहीं करते। सरकार के पास एनटीआरओ भी है रॉ में पहले हुआ करता था एनटीआरओ। मिलिट्री जो सैटेलाइट्स हैं उसके भी तस्वीरें होती हैं, जो सिविलियन सैटेलाइट्स हैं उनकी भी तस्वीरें होती हैं। तो मेरे ख्याल से एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजरी की कोई कमी नहीं होगी। बादल होंगे रात में वगैरह वगैरह कुछ भी हो, पर आपके पास काफ़ी कुछ सबूत होगा जो अभी तक आपने अपने कारण से आपने ये तय किया कि हम इसको अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। पर जितना और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों से ये निकल के आया है, लग रहा है वो दिखाते हैं कि जो छत है बिल्डिंग का, वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ है, कुछ छेद से नज़र आते हैं उसमें, जहाँ पे कुछ आग लगने की चिन्ह हैं। तो हो सकता है कि अगर जो बम गिराए गए हैं वो जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन बम, यानी कि सीधा जाके वो फूटते नहीं हैं, पर वो ज़मीन के अंदर जाके फिर वहाँ पे फूटते हैं। अगर उस प्रकार के बम हों तो वो 1000 किलो इत्यादि के एक्सप्लोजिव्स के नहीं होंगे, काफ़ी कम के होंगे और डैमेज भी कम होगा। शायद उसके वजह से दीवारें नहीं गिनी होंगी। पर अगर वो वाले टाइप के बम हैं तो उसमें कितने आदमी मरे होंगे, नहीं मरे होंगे, कितना डैमेज होगा, वो भी शायद थोड़ा कम साइड पे होगा, नॉट बाहर के साइड पे। इतना हम अभी तक कह सकते हैं, इससे ज़्यादा आज तक हम कह नहीं सकते, क्योंकि वायुसेना ने बॉम्ब के डिटेल अभी तक नहीं बताए और सैटेलाइट इमेजरी न तस्वीरें हमारे हाथ में। That's all we have for you in today's episode of Daily Roundup. To keep yourself updated in this coming elections, do log on to our website www.newsclick.in. Also, you can follow us on Facebook and YouTube.